Today we're going to discuss about trading. Last time हमने डिस्कस किया था डिटेल में. Trading means buying and selling of goods and services. Services are intangible, तो services की कोई physical presence नहीं होती है. Alright? हर बंदे का जैसे teachers हैं, doctors हैं, lawyers हैं, ये services provide कर रहे हैं, consultants हैं. So there's a very mixed review about them. हर बंदा मतलब इनके customers का बड़ा review mixed होता है. However, goods tangible होते हैं, मतलब इनकी physical presence होती है. ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं. सर्विसेज में कोई परचेजेस नहीं होती, कुछ रिटर्न्स नहीं होते. ऑलराइट, गुड्स में ऐसा हो सकता है. गुड्स के होते हैं चार केसेस: परचेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स. ऑलराइट, नाउ एक चीज हम डिसाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ कार शोरूम और मैं परचेजेस कर रहा हूँ, मतलब आई एम बाइंग मोर कार्स. So will purchase increase my goods or decrease my goods? Can you please answer that? If I'm buying more cars, will increase my goods, right? So I'm going to put a plus sign to this. If I'm selling more cars, that will decrease my goods. Okay. So sales will decrease my goods. Okay. This is a very valid point to remember for physical counting of inventory. Inventory valuation एक topic आएगा, उसके लिए बहुत important है. Sales return / return inwards. इससे हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. Now, if we look at the definition, return inwards are the damaged goods returned by the customer to the business. Okay, दोनों टर्म्स पता होने चाहिए, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स. अब आप देख लें कि डैमेज गुड्स जब कस्टमर हमें वापस कर रहे हैं, that will increase our inventory, so that will increase our goods. और वही डैमेज गुड्स जब हम वापस कर रहे होंगे अपने सप्लायर को, परचेज रिटर्न्स, तो हमारे पास इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये प्लीज साइंस लिख लें अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन तो हम लिख चुके थे लास्ट क्लास में. Alright, so moving forward, in the last class we also discussed about channel of distribution. Channel of distribution क्या होता है कि कोई भी एक आइटम या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है, then he sells it to the wholesaler, wholesaler से रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर का क्या काम होता है, he produces and sells. ठीक है, ये गुड्स बनाता है और सेल करता है. ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल कर रहे होते हैं. सो वी हैव अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस गाय. वो हमारे एएस के सिलेबस में नहीं है, वो लेवल्स में है. मोर और लेस बाय एंड लार्ज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट दीस टू बिजनेसेस ओनली इन अकाउंटिंग. ठीक है, व्हिच आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. सही है. एक मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो we valued these items from wholesalers point of view. Identify the value of of the following: purchases, sales, return inwards, return outwards. होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिटरमिन किया था कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि वो कितने का खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, 7 का. मैन्युफैक्चरर ने 3 का बनाया, 4 का प्रॉफिट रखा और 7 का बेच दिया, 7 का बेच दिया उसको. ओके, नाउ ही इज बाइंग इट फॉर. Okay, so we discussed from the wholesaler's point of view, cost would be 7, और फिर wholesaler कितने का बेच रहा है, 10 का प्रॉफिट रख के he is selling it for 17 to the retailer. Okay, so the selling price for wholesaler becomes 17 and the cost price becomes 7. Purchases किस पे वैल्यू होंगी, $7 पे cost price. Sales किस पे वैल्यू होंगी, selling price. जितने का बेचा था उतने का ही होलसेलर को वापस किया जाएगा रिटेलर की तरफ से, दैट इज 17, दैट बिकम्स सेलिंग प्राइस. और फिर होलसेलर कितने का वापस करेगा, जितने का खरीदा था उसने. सो रिटर्न आउटवर्ड्स बिकम्स $7, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. ये लिख लें मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने होमवर्क दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फ्रॉम द रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर अ रिटेलर,
कॉस्ट प्राइस कितने की बन रही है, कितने का खरीद रहा है ये होलसेलर से? डॉलर 17, ओके। और सेल कितने का कर रहा है कंज्यूमर को? डॉलर 42। अब कंज्यूमर कितने का वापस करेगा रिटेलर को यही यही आइटम अगर डैमेज हुआ तो? $42 का। और फिर रिटेलर कितने का वापस करेगा यही आइटम, डैमेज आइटम, होलसेलर को? डॉलर 17 का, जितने का खरीदा था। ओके, सो वी आर काइंड ऑफ determining okay at which value we're going to be recording purchases, sales, return inwards and return outwards. ये ratios में भी काम आएगी चीज़, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी काम आएगी। प्लीज़ नोट दिस डाउन, ठीक है? परचेजेस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं, सेल्स always at selling price, return inwards are always at selling price, return outwards always at cost price. That's the purpose of discussing this. All right, moving ahead, after trading, now trading generates two things. एक इससे जनरेट होती है इनकम्स स्लैश प्रॉफिट्स, एक जनरेट होता है इससे एक्सपेंसेस। ऑलराइट, ये दो मेजर एक्टिविटीज हैं और रिजल्टेंट्स हैं ट्रेडिंग के, ठीक है? we'll write down the definition of this. पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम we're going to discuss about transactions. What are transactions? ये वर्ड आप शायद अगले 2 साल सुनते रहेंगे। Transactions are the activities, are the daily activities of the business. लिख लें ये definition, are the daily activities of the business, ठीक है? Now we'll write down definition of expenses. Expenses are the amounts paid by the business for running transactions on daily or monthly basis. ठीक है, ये definition लिख ले। They are the amounts paid for consuming services, और इसको सिंप्लीफाई करके बता दो, अगर ये डेफिनेशन आगे भी काम आएगी एक टॉपिक में। They are the amounts paid for consuming services. एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू सजेस्ट मी फ्यू एग्जाम्पल्स प्लीज? रिमेंबर दिस कि ये डेली और मंथली बेसिस के बारे में बोल रहा है, ओके? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे कि आप फर्नीचर खरीद रहे हैं और टीवी खरीद रहे हैं या कैमराज इंस्टॉल करवा रहे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर या या वेरी गुड, ठीक है। तो एज ऑफ नॉन सजेस्टेड स्टेशनरी, ओके। एंड वैसे स्टेशनरी की बल्क क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी का भी एक मसला है
बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लेटर ऑन. स्टेशनरी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदी जा रही है फिर वो एक्सपेंस नहीं होगा, फिर वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाती है. बट फॉर नाउ, फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, यू आर राइट अफनान. ऑलराइट देन, एनी अदर एग्जांपल? Electricity, salaries, salaries, maintenance, very good. Or rent, cleaning expenses. Yeah, that's depreciation is a bit technical, so we're just gonna skip that for a moment. Uh, or etc. Expenses, examples, advertising. You can say, ठीक है. Now I think we're pretty much clear about expenses. अच्छा, इसकी बड़ी short lived जो इसका स्पैन होता है बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है. Why? Because it's on daily or monthly basis. सही है. Not more than an year इसका जो लाइफ स्पैन होगा. ओके. Similarly हमने जितनी बातें की हैं, it has all been regarding expenses and investments. We haven't discussed anything about returns. ठीक है. हम डिस्कस कर लेते हैं about income slash profit. Are the amounts received by the business through transactions through transactions, on daily or monthly basis. These are the amounts generated through providing services. ठीक है. For example, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ. I'm teaching you guys. I'm generating an income out of this. I'm providing a service. All right, on daily or monthly basis. So can I say one of the easier example is fees received. Excuse me. And then अगर कोई एजेंट है, कंसल्टेंट है, they generate commission. So commission received can be an example. Okay. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक के साथ डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो you're receiving interest on that, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड. ठीक है. अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट सेल कर दिया है यूज़ करके और उस पर कोई प्रॉफिट आ गया है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट. लिख लें अपने पास. ठीक है. ये मल्टीपल एग्जांपल्स हो गई इनकम्स की. सही है. अच्छा, एक जो चीज़ हमने एक्सपेंसेस और इनकम्स में जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐड करना पड़ेगा आपको डेफिनेशन में, वो ये है कि एक्सपेंसेस
they decrease owner's claim in the business. They decrease owner's claim, that is, मतलब एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट क्या होता है? इक्विटी के ऊपर होता है, डायरेक्टली कैपिटल के ऊपर होता है. दे डिक्रीज कैपिटल. सही है. जैसे आप देखते होंगे स्कूल्स आजकल जो है टीचर्स की सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं, जो बेचारे एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, या उनको फायर कर देते हैं. और आपने ये भी देखा होगा स्कूल्स में कि वो मार्कर के ऊपर भी बड़ी बहस चल रही होती है टीचर्स की, एडमिन या जेनेटोरियल स्टाफ के साथ, कि जी मार्कर नए क्यों नहीं दे रहे, वो उसी में इंक इंक भरनी रीफिल करने को दे देते हैं. वाई? बिकॉज schools actually control their expenses. उन्हें पता होता है कि हम अपने expenses बढ़ा देंगे तो हमारे ओनर का क्लेम क्या होता रहेगा, कैपिटल क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा. ऑलराइट, ओनर वोंट बी हैप्पी अबाउट दिस. ठीक है. सो टू प्लीज द ओनर दे हैव टू मिटिगेट देयर एक्सपेंसेस. यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक होता है दूसरा तरीका, दैट्स द अमेरिकन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Incomes, they increase owner's claim. ये हमारा देसी तरीका है एक्सपेंसेस को कम करने का. ठीक है. ओनर्स क्लेम में इसलिए लिखा रहा था कि आपको कैपिटल इक्विटी भी याद रहे साथ साथ. ठीक है ना? अच्छा, अमेरिकन वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कि आप अपना इनकम बढ़ा ले. राइट, लाइक यू spend a lot on your organization, but then you generate income through that as well. सही है. जो कि आप देख रहे होंगे since 2008-9 many A levels colleges, like, they don't market about their faculty anymore. What they market is कि जी हम AC प्रोवाइड कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम iPads प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और ऐसा फर्नीचर हमने डाल दिया है जो कि बड़ा कंफर्टिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए. आई मीन, दे डोंट टॉक अबाउट द क्लास साइजेस, दे डोंट टॉक अबाउट हमारे पास टीचर कितना क्वालिफाइड है, दे डोंट टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस. ऑलराइट, what they talk about is the services that they're offering. Okay, so that's the new way of dealing with things. So the new colleges kind of, so yeah, so new colleges kind of spent more on their non-current assets to increase revenue, to increase profits. All right. So the fee structure of A level is not the same anymore as it was during my time when I was studying. So this is very essential. There are two ways of doing things. Like, आप या तो अपनी इनकम बढ़ा लें, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करते रहें. राइट. तो you'll feel the difference between those organizations. सही है ना? तो I hope ये clear है, incomes and expenses. Now we're going to be discussing uh, last definition, that is drawings. Drawings are the resources withdrawn by the owner for personal slash own use. दोनों टर्म्स आ सकते हैं ट्रांजैक्शन में लिखे हुए, तो आपको पता होना चाहिए. For personal slash own use. It can be in three forms. Cash,
non-current asset, inventory. These are the technicalities which uh, students can be unaware of. ड्राइंग्स की भी तीन फॉर्म्स हो सकती हैं. कैश हमारा फेवरेट जो तरीका है विड्रॉ करने का. हमें लगता है कि सिर्फ बिजनेस से पैसे ही विड्रॉ कर सकते हैं ओनर. नो, ही कैन ऑल्सो विड्रॉ सम नॉन करंट एसेट. जैसे कि मैं अपने सेंटर से कुछ फर्नीचर उठा के ले आता हूँ. स्टडी चेयर्स उठा के ले आता हूँ घर पे, और 3-4 चेयर्स उठा के ले आता हूँ अपने यूज़ के लिए. तो वो भी क्या होगा, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट. अगर मैं प्रोजेक्टर निकाल के घर पे रख लेता हूँ सेंटर से, वो किस फॉर्म में ड्राइंग्स होगी, इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट. अच्छा, इन्वेंट्री का तो आपको समझ आ जाना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव मेरी डेनिम की फैक्ट्री है, जीन्स फैक्ट्री है, एंड माई चिल्ड्रन आर नॉट बाइंग एनी जीन्स. उनकी फैक्ट्री से ही उनका सामान सारा पहुंच जाता है, तो उनको शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जीन्स की. राइट, तो दिस इज ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री. पता होना चाहिए ये आगे काम आएगी चीज़. ऑलराइट, अनदर थिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल कि ड्राइंग्स का इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर. दे डिक्रीज ओनर्स क्लेम. यानी कि कैपिटल स्लैश इक्विटी दैट विल बी डिक्रीजिंग. अब आप कहेंगे सर वो ओनर के पास तो राइट होता है कि वो अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल ले. देखिए, आप एज एन अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है. एज एन अकाउंटेंट यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट टू द बिजनेस. आपकी इंक्लिनेशन बिजनेस के लिए होती है, आप बिजनेस के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस के लिए अकाउंटेबल हैं. ओनर के लिए अकाउंटेबल आप सेकेंडरी फॉर्म में होंगे या शायद ना भी हो, ठीक है. बिजनेस के अंदर ओनर का जो क्लेम होगा, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया होगा, उसका ड्राइंग्स का इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर. ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सही है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस इज अ वेरी important point. Please note this down.